Hello there. Today we are going to study IUCN Red List. So, what IUCN stands for? IUCN is the acronym for International Union for Conservation of Nature. IUCN categories species are classified by the IUCN Red List into 9 groups, set through criteria such as uh, rate of decline, population size, area of geographic distribution, and degree of population and distribution fragmentation. According to these criteria, they have set 9 categories. And first one is extinct, जो विलुप्त हो चुकी है, no known individual remaining. And second is extinct in the wild, मतलब जंगलों में वहाँ पे तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नेचुरल जो उनका एरिया है वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. नॉन ओनली टू सर्वाइव इन कैपिटिविटी और एज ए नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज. तो ये दूसरी कैटेगरी हुई EW. एंड थर्ड कैटेगरी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR, extremely high risk of extinction in the wild. Fourth one is endangered, EN, high risk of extinction in the wild. And fifth one is vulnerable, code for VU, and high risk of endangered in the wild. And sixth one is near threatened, likely to become endangered in the near future. And seventh one is least and concerned, that is lowest risk. And eighth is data deficient, not enough data to make an assessment of its risk of extinction. And ninth category is not evaluated, code NE, and has not yet been evaluated against the criteria. So these are IUCN categories. Now India has 988 species on IUCN Red List as on year 2015, and according to this list, this list contains 3 categories: critically endangered, and vulnerable species. We are going to study these 3 lists: critically endangered, and vulnerable species. So starting with critically endangered mammals. So first, this is select the pen. Himalayan brown red bear. This is Himalayan brown, और कह सकते हैं red bear. And its distribution is Nepal, Tibet, North India, and North Pakistan. And why is it threat to threat क्या इस स्पीसी को? Loss of suitable habitat and percussion by humans. तो ये थ्रेट इसका है कि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और ह्यूमन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. मूविंग टू नेक्स्ट स्पीसीज, दैट पिग्मी हॉग, or we can say Porcula salvinia, and it is the world's smallest wild pig. This species construct a nest throughout the year, and it is one of the most useful indicator of the management status of grassland habitats. And its habitat includes relatively undisturbed tall dry grassland. इसका हैबिटेट ग्रासलैंड ही होता है. तो ये जो पग्मी हॉग है जो फोटो में देख रहे हो, यू सी इन पिक्चर, दिस इज पग्मी हॉग, सबसे छोटा सूअर है, वाइल्ड सूअर. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रीवियसली स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, नाउ ओनली फाउंड इन असम, in Manas Wildlife Sanctuary and its buffer reserves. And that sucking loose, it is a parasite. जो होती है sucking loose, that its scientific name is Hemidrophinus oliveri, a parasite that feeds only on pygmy hogs, will also fall in the same category of critically endangered as its survival is linked to that of host species. क्योंकि ये पग्मी हॉग ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो उस पर रहने वाले पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएंगे. दैट सकिंग लूज. एंड थ्रेट, इसके थ्रेट के रीज़न है, द मेन थ्रेट्स आर लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड, ड्राई सीजन बर्निंग, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, एंड एफोरेस्टेशन ऑफ लैंड्स. हंटिंग इज ऑल्सो ए थ्रेट. तो ये सारे रीज़न हैं कि ग्रासलैंड्स ख़त्म हो रहे हैं मेनली,
और लाइफ स्टॉक जो पशुधन है उन 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 ग्रासलैंड्स को आने की वजह से इसलिए भी इसकी थ्रेटिंग है. सो ऑल दीज अबाउट इट्स थ्रेट. Next species is Andaman white-toothed shrew. The scientific name is Crocodura andamanensis, and its distribution is it is an endemic to the South Andaman Island of India. Endemic मतलब वहीं मूल रूप से वहीं की है. They are usually active by twilight or in the night, and threats are due to habitat loss, natural disaster such as tsunami, and drastic weather changes are thought to consider to current population decline. इसकी वजह से इसका decline हो रहा है. Next species Condena rat, that its scientific name is Millardia condena, and its distribution is only from the small Singhara plateau about 1 square kilometer near Pune in Maharashtra. It is a nocturnal browning rodent that is found only in India. ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है. एंड इट्स हैबिटेटेड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई deciduous forest and tropical scrubs. While the threats to this species are major threats are habitat loss, overgrazing of vegetations, disturbance from the tourism and recreational activities. Next species is large rock rat. This is large rock rat or Elvira rat. Scientific name is Cyrinomys elvira. It is a middle-sized nocturnal burrowing rodent endemic to India. मतलब ये प्रजाति भी इसकी इस चूहे की प्रजाति भी मूलतः भारत की है. Habitat tropical dry deciduous shrubland forest and seen in rocky area, जैसा कि नाम है इसका. And habitat distribution known only from the eastern Ghats of Tamil Nadu. Record from an elevation of 600 meter above mean sea level. And major threats are habitat loss, conservation of forest and fuel food collection. इसकी वजह से इसको इस स्पेसिफिक को थ्रेट हो रही है. नेक्स्ट इज नेम्ड फ्लाइंग स्क्विरल. साइंटिफिक नेम इज बिस्मोयोप्टेरिस बिस्वासी. ये उड़न गिलहरी जिसको बोलते हैं हिंदी में. इट इज यूनिक, द ओनली वन इन इट्स genus and flying squirrel that is restricted to a single valley in Namdap in Arunachal Pradesh. Habitat is tropical forest and its distribution found only in Namdap Tiger Reserve in Arunachal Pradesh. That's why it is more important. And threats due to hunting for food. Next is Malabar civet, that is Vivera civetina. It is endemic to India and was first reported from Travancore in Kerala. And it is nocturnal in nature and found exclusively in Western Ghat. Habitat includes wooded plain and hill slope of evergreen rainforest. Habitat or distribution are found in Western Ghat. Threat due to deforestation and commercial plantation are major threats. Now the Somerton rhinoceros, that Dicerorhinus and Somertinus scientific name है, वो काफ़ी हार्ड सा लग रहा है. It is smallest and most endangered of the 5 rhinoceros species. It is now thought to be regionally extinct in India, though it once occurred in the foothills of the Himalaya and northeast India. The Java rhinoceros is also believed to be extinct in India, and only a small number survive in Java and Vietnam. Threat due to poaching and loss of habitat. This is Kashmir stag and hangul बोलते हैं. Cervus ilphohus hangulu, and its subspecies of red deer which is native to India. Habitat are dense riverine forest, high valleys and mountain of the Kashmir Valley and North Chamba in Himachal Pradesh. State animal of Jammu and Kashmir. Threat due to habitat destruction, overgrazing by domestic livestock and poaching. And now moving to the
endangered mammals. This is red panda. First one is red panda. Status moved from vulnerable to endangered recently. And red panda is endemic to the temperate forest of the Himalayas. Its habitat includes Sikkim, Assam, and North Arunachal Pradesh. Threats are due to habitat loss and fragmentation, poaching, and inbreeding depression. क्योंकि this is all about red panda. And now moving to wild ash khur, or scientific name है Equus himmunus khur, जंगली गधा कहते हैं उसको. डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली अक्रॉस इन रन ऑफ कच्छ रीजन एंड पॉपुलेशन स्टडीली इंक्रीजिंग. अब थोड़ी इंक्रीज हो रही है. टुडे इट्स लास्ट रिफ्यूजी लाइज इन द इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी लिटिल रन ऑफ कच्छ. कहाँ पे ये भी पूछे कि इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी का, दैट इज इन लिटिल रन ऑफ कच्छ. थ्रेट क्यों? ड्यू टू डिजीजेस, हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू साल्ट एक्टिविटीज, invasive species Prosopis and Julphiloserbs. ये कुछ झाड़ियों के नाम है जो साल्ट पानी में उगते हैं. Encroachment and grazing by the Maldari. Humans carry buffalo for grazing. And this is UPC question. And question is a steady and saline area in the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predator in that area, but its extents is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड, द इंडियन वाइल्ड, सॉरी, that is Indian wild ash, the option 2. This is in option 2. क्योंकि इसको रिमूव करते हैं. ऑप्शन टू दिस इंडियन वाइल्ड एश, क्योंकि सैंडी सैलिन एरिया से पता चलता है. कच्छ रीजन की बात करें, इंडियन वाइल्ड बफेलो है वो टेराई रीजन में भी पाई जाती है. और इंडियन वाइल्ड बोर है कैन सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड में, टैगा में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. और दे प्रेफर लाइफ इन डिसीडियस. और चिंकारा तो इंडियन वो है. तो सो इंडियन वाइल्ड एश इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो मूविंग टू नेक्स्ट एनिमल, the dhole, an Asiatic wild dog or Indian wild dog. Distribution, they are occur in most of India, south, mostly in India, and that is south of Ganges, particularly in central India, highlands and western and eastern Ghats of southern state. And in northeast India, they inhabited in Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and West Bengal. Threat due to habitat loss, depletion of their prey base, competition from other predators, and persecution and possibly disease from domestic and feral dogs. Next is Elk's deer, और थमीन और कह दो, या ब्रो antlered deer, ये हिरन ही है. Distribution is Kembul Lamjao National Park in Manipur. Threat due to overgrazing and loss of grassland and habitat. Golden langur, देखो, that seen in this picture. Scientific name, this is what? And primate is an old world monkey. Or distribution is small region of western Assam in the neighboring foothill of the Black Mountains of Bhutan. Threat due to deforestation and human encroachments. इसकी वजह से गोल्डन लंगूर की जो प्रजातियों को खतरा है. And next is Himalaya white belt musk deer. Its habitat in Kashmir, Kumaon and Sikkim. Threat is poaching and illegal trade of its musk. ये दिख रहा है इसका musk. It's musk. This is its musk. And only male produce the musk.
देन नेक्स्ट इज हिस्पिड हेयर, हिरन है ये, और असम रैबिट कह सकते हो, हैबिटेट एट साउदर्न फुटिल ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज, एंड थ्रेट्स आर द हैबिटेट ऑफ हिस्पिड हेयर इज हाईली फ्रेगमेंटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ रही है इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज हॉग डियर. Its habitat is terai region and grassland in northern India, threat due to hunting, habitat loss, habitat fragmentation, and human encroachments. Next is lion-tailed macaque. This is lion-tailed macaque or Wendouree. Scientific name is Macaca silenus, and this is endemic to the Western Ghats. मूलतः वहाँ वेस्टर्न घाट की ये प्रजाति है बंदरों की. अवॉइड ह्यूमन प्रेजेंस and they do not live and feed or travel through plantations. Its habitat is evergreen forest in the Western Ghats, and it's threat due to habitation fragmentation due to spread of agriculture, tea, coffee, teak, quinoa, and construction of water reservoirs and human settlement to support such activity. तो इसके वजह से इसकी लाइफ को थ्रेट है. Next, there is a question in UPSC. In which of the following states is lion-tailed macaque found in its natural habitat? So there are options: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and we know that these are lion-tailed macaques are found exclusively in Western Ghat. So Western Ghat lies in the state where the state Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. So A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीता और तिब्बतियन एंटीलोप, ये भी एक हिरन की प्रजाति, स्टेटस ड्यू टू नियर थ्रेटन, और इसका हैबिटेट आर कोल्ड डेजर्ट्स. थ्रेट द चीरू इज थ्रेटन बाय हंटिंग फॉर इट्स फाइन वुल के लिए, एंड मीट एंड मैग्निफिसेंट हॉर्न के लिए. इसके जो देखो जो ये सींग है कितने लंबे हैं, मैग्निफिसेंट, और इसकी मीट एंड फाइन वूल की वजह से इसकी हंटिंग ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज नीलगिरी लंगूर एंड नीलगिरी लीफ मॉन्की. साइंटिफिक नेम इज ट्रैम्पिटिकस जॉनी. हैबिटेट आर हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक ट्री स्पीसीज, इसकी वजह से इसको थ्रेट है. देन नेक्स्ट इज नीलगिरी टरा. And Nilgiri Tara is the largest of the three Tara species inhabitant mountain grassland of Western Ghats. It is the state animal of Tamil Nadu and threat due to habitat loss, overgrazing, and illegal hunting. And now we are moving to endangered marine mammals. Next is freshwater and river dolphin. Its distribution is India, Bangladesh, Nepal, and Pakistan, which is split into two subspecies, that Ganga river dolphin and Indus river dolphin. And threat to this species are unintentional killing through entanglement in fishing gears. वो मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए जाते हैं, जो उनके आगे हुक है, उनकी वजह से ये मर रही हैं. एंड हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन due to water development projects such as barrage बनाना, high dams and embankments, किनारों की वजह से सिकुड़ना नदियों का, pollution and industrial waste, pesticide, municipal sewage discharge and noise from vessel traffic, इनकी वजह से इनका हैबिटेट को लॉस है. तो अपन ने देखा दो कैटेगरीज है रिवर डॉल्फिन की. फर्स्ट वन इज Ganga river dolphin that habited in Ganga and Brahmaputra river and their tributary in Bangladesh, India and Nepal. Ganges river dolphin has been recognized by the government of India as its national aquatic animal. इसको national aquatic animal का दर्जा दिया गया है. And Indus river dolphin habitat in Indus river in Pakistan and Bees, Satluj and its tributaries Bees and Satluj. And there is question on Ganga river dolphin. Other than poaching, what are the possible reasons for declining in population of Ganga river dolphin? 4 ऑप्शन दे रखे हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बैराज ऑन द रिवर, बिल्कुल
अपन ने पढ़ा भी था। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, ये इसका रीज़न नहीं है कि पॉपुलेशन की क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से इसको थ्रेट है, बिल्कुल नहीं है। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, यस दिस इज द रीज़न। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर, हाँ ये फर्टिलाइजर की वजह से भी इसको थ्रेट हो रहा है। और जो सेकंड रीज़न है तो ये इसके लिए सपोर्टिंग कमेंट है कि सुसाइड शेयर इट्स हैबिटेट विद द क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड वेटलैंड बर्ड्स, मैनी ऑफ विच आर फिश ईटर्स एंड आर पोटेंशियल कंपटीटर विद द डॉल्फिन्स। नेक्स्ट, मूविंग टू क्रोकोडाइल स्पीसीज इन इंडिया, जिसको मगर कहते हैं, और मार्श क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड ई सेंचुरी कोस्ट क्रोकोडाइल. Gharial are critically endangered. Once thrived in all major river system of Indian subcontinent. Today they are extinct in Indus River, in Brahmaputra, in Bhutan, Bangladesh, and in the Irrawaddy River. Their distribution is now limited to 2% of their former range. And Magar, a vulnerable species of crocodile, is a freshwater species found sparely in various lake, river, and marshes in the Indian subcontinent. Crocodile species, apart from the eastern coast of India, the saltwater crocodile least concern is extremely rare in the Indian subcontinent, and huge population is present within the Bhatkanal Wildlife Sanctuary of Odisha. They are known to be present in small number throughout the India and Bangladeshi portion of Sundarban Delta. And all these about IUCN Red List. If you like this, please share and like my channel, and if you not subscribed, please subscribe to this channel. Thank you very much.